synthesis. So ladder network, this word I have used when I was doing network synthesis, and I told you what ladder means, right? So in this kind of network, you have this kind of arrangement. You'll have a component here, then you'll have a component here, then you'll have a component here, you'll have a component here. So this is called ladder arrangement. And we have done Foster and Cover forms. In fact, which form looks like a ladder, Foster or Cover? Anybody remembers? Which one looks like a ladder? Is it the Foster form that looks like the ladder or the Cover form that looks like a ladder? Yes, Kritika, very good. So Cover forms look like ladder network, Yes, Mihir, correct. So let's get into what we should get. Now, see, the question normally comes, find transfer function. So when I use the word transfer function, there is two names that you will find out every time. One is called impedance function and one is called transfer function. So whenever the word transfer function comes, you should understand the ratio is going to be of like terms, like V2, V दोनों है ना numerator और denominator में, या current आएगा I2 upon I1. So transfer function is normally when the components are, the parameter is same, numerator or denominator में वो same है, that's called transfer function. If I say impedance function, it is understood. Impedance है ना, तो impedance मतलब क्या होगा, V upon I पूछेंगे, V2 upon I1 या V1 upon I2, so when you see V upon I तो समझ जाने का ये impedance function के बारे में बात हो रही है, नहीं तो वो transfer function होगा. तो इसको हम solve कैसे करते हैं, ठीक है? So ध्यान से सुनना. The first step, like you can see in the diagram, the first step while observing this is that you can see I2 is equal to 0. तो आपको I2 0 लेना ही है, मतलब that's how it all begins. आपको हमेशा I2 क्या लेना है, 0 लेना है. Now see, because the textbook has skipped some steps, so I'm trying to go slowly on this. I hope your attention is there. This is V1 on the left side and this is V2 on the right side. Okay. So now when I am looking at this particular diagram, मुझे कुछ points को mark करना है. अब वो points क्या mark होंगे? ये वाला जो पहला पॉइंट होगा इसको हम VA बोलेंगे और ये जो दूसरा पॉइंट है उसको हम VB बोलने वाले हैं. So I'm just writing all that into the diagram. So this is going to be my VA and this is going to be my VB. मतलब it will not be written in the exam. आपको खुद से करना है ये. Next, हमारा जो I1 का करंट यहाँ पर आ रहा है, you can see an I1 current that is coming from the left side, right? आपको एक और करंट यहाँ इमेजिन करना है, लेट्स कॉल इट एज IB. मतलब दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्मेट, हर डायग्राम में यही करना है पहले. So that way it is much easier. Now we are going to start from the right and go towards the left. Ladder ऐसे ही solve होता है, right to left जाने वाले हैं. So ladder का पहला point क्या होता है कि ये VB क्या है. Now see, VB और V2 के बीच कोई कंपोनेंट नहीं है और I2 ऊपर से 0 है. So anybody looking at this network will tell you that अगर मैंने अपना वोल्ट मीटर यहां लगाया तो मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे वही मिलेगा जो ये टर्मिनल्स पे है. आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? यानी कि अगर यहाँ का जो इट्स लाइक अ VTH, इट्स लाइक अ VTH, जो वोल्टेज अक्रॉस 1 फैरेड होगा वही तो फाइनल वोल्टेज होगा, राइट? सो द फर्स्ट पॉइंट दैट आई एम गोइंग टू राइट आउट हियर इज VB is equal to V2. I hope you don't have any confusion in that. VB is equal to V2, right? इसमें कोई डाउट नहीं है. आई होप सो कि जो वोल्टेज VB होगा वही V2 होगा. नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जा रही हूँ. सो आई एम राइटिंग द नेक्स्ट पॉइंट. It's very simple. It's not difficult. Now, if I am a person who wants to define IB, you know what we are going to do. So हम लोग पीछे पीछे आ रहे हैं. अभी VB का हो गया, अभी next IB की तरफ आ रहे हैं. Can I say that IB जो current है is the current that will flow here also, because उधर तो I2 0 है. So can I say IB is V2 upon 1 upon S? ये सबको समझा क्या? क्या है ये? Ohm's law.
I is V by R, you know. So what is the factor over there? ये जो 1 farad है, it is 1 by S. So can I write this as S times of V2? Any doubts still here? I'm going slow. I just want it done. I in the examination or in the test that comes on Wednesday, I will ask you बीच में, you know. So आपको सिर्फ identify करना है कि वो बीच में क्या आएगा. So here, yes, Kritika, pay attention. IB is the current. Which part, Kritika? I think you all can unmute and talk to me. That will be better. This chat really irritates me actually. You can unmute and talk to me. What is the problem? Ma'am, the IB part. IB So is IB is the current. IB is the current that is coming from here. तो वो इधर नहीं जाएगा ना, मतलब इधर तो I2 0 है, मतलब करंट तो उधर ओपन है, तो वहां नहीं जाएगा. मतलब कहाँ जाएगा? ये इस फैरेड के थ्रू जाएगा, राइट. सो आई क्या होगा? V by R. सो इट इज V मतलब क्या है? VB है, बट VB आपका क्या है? V2 ही तो है. सो हम लोग प्रीवियस स्टेप को देखते हैं हमेशा. So IB is VB upon 1 by S, but what is VB? VB is V2. अभी समझ में आया? yes, ma'am. Okay, so now I'm going to the third step. तो हमारा कौन सा काम हो गया? VB हो गया, IB हो गया, राइट. नेक्स्ट हम VA की तरफ जा रहे हैं. अभी देखो VA ना टेक्स्ट बुक में बहुत डायरेक्टली लिखा है. So I prefer to tell you how it came. So now let's see how to write VA. ठीक है. तो VB के बारे में हमने लिखा, हमने IB के बारे में लिखा, अभी हमें VA लिखना है और ये हमारा करंट IB है. नाउ इफ यू यूज द नॉलेज ऑफ KCL, कैन आई से IB is VA minus VB upon 1. ये समझा क्या? VA minus VB upon 1. अपना जो नॉर्मल नोडल एनालिसिस है उसकी बात हो रही है. सो डिफरेंस इन वोल्टेज अपॉन द रेजिस्टर. रेजिस्टर क्या है? 1 है. Okay, but मुझे VA चाहिए. Now tell me what is so I'm going to write let's say I'm going to write VA now. So can I write VA as, see what I'm writing, can I write it as IB plus VB? बराबर है ना? I'm just rearranging it, right? So IB plus VB. Now what is VB? But see, ये पीछे पीछे जाना है. Okay, ना IB और VB हमें पीछे देखना है. अच्छा, IB क्या है? SV2. What is VB? V2. आपको समझ रहा है? लैडर में हम प्रीवियस वैल्यूज देखते हैं. सो IB में क्या करने हैं? SV2 प्लस VB क्या है? V2. सो V2 कॉमन ले लेंगे. V2 कॉमन लेंगे तो S plus 1. अब ये समझा क्या? So each time we are looking behind. So where did we start from? It all started from V2. So we first said that VB is equal to V2. Then we looked at IB. We said IB is V upon R. So we wrote V2 upon 1 by S because जो VB है वही V2 है. Then we wrote IB, which is the current starting from A going to B. So it is always VA minus VB ना, जहां से आ रहा है वो हायर पोटेंशियल होता है. सो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टर. रेजिस्टर 1 है तो मैंने VA लिखा और मेरा VA आता है IB plus VB and I got this. यहां तक समझा? Any doubt still here? Because क्वेश्चन को भूलना नहीं है. क्वेश्चन इज V2 upon V1, you know, so we need to come to that point. So ये फर्स्ट 3 पॉइंट्स में कोई डाउट है किसी को? If you have, you can ask. Others, I'm proceeding. Now, the fourth step. The fourth step, if you observe the diagram, is I1 is the current which is coming. I1 is the current which is coming. I hope you can see I1. Can I say I1 is VA upon 1 by S plus IB? Any doubt here? मैंने क्या लिखा? कुछ नहीं लिखा. I1 is this current plus this current. So I1 is VA upon 1 by S plus IB. Please ask me if you have any doubts, because
यस, केसीएल बोल सकते हैं ना, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट. ओके, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट. तो आई इज इक्वल टू जो करंट 1 फैरेड से जा रहा है, इट इज वी ए अपॉन 1/s, प्लस जो करंट 1 ओम से जा रहा है, दैट इज आई बी. So any doubt till now? So what I've got essentially over here is S times of VA plus IB, right? Now I'm going back, okay? You know your VA, you know your, see what you've got. You got I1 is equal to S times of VA plus IB. So can anybody tell me what is VA? What should I write? Can anybody tell me what should I write VA? So what's my VA? Yes, VA is given over there. I can see it over here. I can call it as what I can see that V2 into S plus 1 मेरा VA है. But इस S को मत भूलना, एक S भी था वहां पे. Right? So I'm getting S times of S plus 1 plus V2 plus मेरा IB क्या है? IB. मुझे मिला था IB कहीं तो. Right? What is my IB? My IB is S times of V2. इस तरीके से वो लोग सॉल्व करते हैं, मतलब वो लोग V2 को कॉमन लेते हैं, राइट? एंड ब्रैकेट के अंदर आएगा S² plus 2S. आई होप यू आर विथ मी, बिकॉज दिस इज अ लिटिल ऑन द थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए इसके लिए. सो I1 इज इक्वल टू V2 टाइम्स ऑफ S² plus 2S करके आता है. क्या आ रहा है अभी? I1 आ रहा है. सो फर्स्ट स्टेप क्या था? VA इज इक्वल टू V2. लुक एट द डायग्राम. ओके, फर्स्ट स्टेप क्या है? VB इज इक्वल टू V2. सेकेंड क्या है? IB जो करंट आया है, इट इज इक्वल टू VB अपॉन 1/s. फिर VA के तरफ आए जहां पर हमने KCL लगाया, और फोर्थ स्टेप में हमने वापस KCL लगाया और हमने I1 लेके आए. यहां तक समझा? तो आप कर क्या रहे, आप वो जो वेरिएबल्स है ना AB, उसको 1 2 में लेके आ रहे हैं. अभी लास्ट स्टेप है. ओके, लास्ट स्टेप है, फिफ्थ स्टेप है. लुकिंग एट द डायग्राम, ओके, लुकिंग एट द, मतलब हम कहाँ से आ रहे हैं, मैं वापस बता रही हूँ, हम राइट से लेफ्ट आ रहे हैं. सो वी आर इन द लास्ट पार्ट ऑफ इट. कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द केसीएल, मतलब किरचॉफ नोडल, या जो भी आपको सोचना है, यहां पर मुझे नोडल लगाना है अभी, जिसमें V1 आना चाहिए. तो हाउ शुड आई राइट I1 इक्वल टू, हाउ शुड आई राइट I1 इक्वल टू, कैन एनीबडी थिंक अबाउट दैट? How should I write I1 equal to? Because now all these steps which I'm writing, the textbook has completely skipped, assuming we know that, the famous we know that. So what is I1 equal to? Correct. Very good, Atharva. So what is I1? I1 is equal to V1 minus VA upon 1. I hope everyone agrees to that. I1 is the difference, because एक नोड से दूसरे नोड जा रहा है. So V1 से जा रहा है VA upon resistor. So एक बार वो आ गया, हम V1 को लिख सकते हैं. So V1 कैसे लिखेंगे? देखो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे. I am writing it as I1 plus VA. I hope all of you agree. Now I am going back and I am going to check कि मेरा I1 मेरे को कहीं तो मिला था, मेरा VA कहीं तो मिला था. So I am going to just substitute that. So my V1 becomes nothing but S² plus 2S times of V2 plus S plus 1 times of V2. So, again, V2 will come out common, and in bracket, you will get S² plus 3S plus 1. Do you realize that we have reached our answer? I don't know whether you realize we have reached our answer, because our question was, what is V2 upon V1? So we have reached our answer. And what is our answer going to be? Our answer is going to be V2 upon V1 is 1 upon S² plus 3S plus 1. So this is going to be our answer. And this is the final answer. अब इस पॉइंट्स में कुछ गड़बड़ या कुछ गड़बड़ लग रहा है आपको? जहां पर भी आपको लगा, इट्स वेरी सिंपल, सेम स्टेप्स है. वी विल डू वन मोर क्वेश्चन सो यू विल अंडरस्टैंड.
बट यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं राइट साइड से लेफ्ट की तरफ जाते हैं. सो आई एम गोइंग टू गिव यू 1 minute to think if you have any some question troubling you. Ma'am, for the fourth and fifth part, we have used I1 itself. So I For didn't fourth and catch fifth the difference. part, no, actually we are not using the same equation of I1. See, like that, if you see 2 and 3 में भी IB use कर रहे हैं. But दोनों equations में फर्क है. See, IB is VB upon 1, मतलब उसके flow के हिसाब से हम VB upon 1 by S भी लिख सकते हैं. और IB को VA minus VB upon 1 भी लिख सकते हैं. Same thing we did for I1. I1 can be written as VA upon 1 by S plus IB. Also, I1 can be written as V1 minus VA upon 1. So if you look at 2 and 3 and 4 and 5, it's the same nature. Can you see that? Yes, ma'am. Thank you. Yeah. So any other question anybody has, and we can do one more to check how much we understood. So the transfer functions or other functions, they can ask anything. So let's check one more question for your understanding, so you will understand it much better. So it's the same step. Trust me, it is the same step. So that's why I kept it very simple. Again, they've asked you, they've given you a diagram and they've asked you what is V2 upon V1. So now what do we do? So you can guess now what we are going to do. Because abhi apna ek ho gaya hai. So the same step. V2 और यहाँ पे I2 को 0 ही लेना है, तो फर्स्ट स्टेप इज गोइंग टू रिमेन द सेम कि जो आपका VB है वही आपका V2 है. No change. Second, what is IB? Now IB is the current that will flow through this 1 ohm. So IB is nothing but VB upon 1. Now what is VB? It is V2 upon 1. So same step, कुछ एक्स्ट्रा कुछ कर ही नहीं रहे. बट आईबी को हम कुछ और तरीके से भी लिख सकते हैं. व्हाट कैन आईबी रिटन एज? आईबी शुरू कहां से हो रहा है? वीए से. सो वीए माइनस वीबी अपॉन एस. बट व्हाट इज माय, मुझे वीए चाहिए इसमें, तो मेरा वीए क्या है? आई कैन राइट एस टाइम्स ऑफ आईबी प्लस वीबी. यू एग्री? एंड नाउ व्हाट इज आईबी? मेरा आईबी क्या है? मेरा आईबी तो मेरा V2 है. प्लस व्हाट इज माय VB? मेरा VB भी तो V2 है. So can I say that I have got S plus 1 times of V2 as my VA? Once I've got that, my fourth point, you know what I have to go in the fourth point? In the fourth point, I look towards I1. Abhi I1 kya hai? So I1 is going to be, what's going to be my I1? This plus this, right? Same chal raha hai. So what is I1 equal to? I1 can be written as VA upon 1 plus IB. राइट. सो आई कैन राइट दिस. मुझे VA पता है, प्रीवियस इसमें S plus 1 टाइम्स ऑफ V2 आ रहा है, प्लस मेरा IB क्या है? V2 है. मैंने V2 को कॉमन ले लिया तो मुझे मिल रहा है S plus 2. And then I come to the fifth one, just like I did last time. What is I1 again? I1 can be written as V1 minus VA upon S. So what's my V1? It is S times of I1 plus my VA. And what is my I1? It is nothing but V2 times of S plus 2 plus what's my VA? VA is S plus 1 times of V2. And therefore I take V2 common and I should get a term like S square plus 3S plus 1 inside, which is equal to my V1. So I know what is my V2 upon V1. It will be 1 upon S square plus 3S plus 1. अब ये क्लियर हुआ क्या? Any doubt, please ask. If you have any doubt, please ask, because I want this clear. Doubt है कुछ? समझा वो पैटर्न? समझा? So this is, yeah, I can give you some time to write this. So just see that whether you're able to write on your own. Try करो कि आपको वो खुद से लिखने को हो रहा है क्या.
because it's all about writing on your own, because when I give you in the examination, it should not take much time. आपको समझना चाहिए राइट साइड से चालू करना है, लेफ्ट की तरफ जाना है, पहले वोल्टेज की बात होगी, 2 स्टेप्स में करंट की बात होगी, और फिर 2 स्टेप में I1 की बात होगी. So I'll keep it simple. I will give you something which is similar to this. So, it will be simpler for you to tackle it. So the pattern remains same. Do you remember how we had the pattern last time for NT? Any doubts till now? Have you written it? Have you understood? Are you able to write? Because we had, 3 marks का question था, याद है आपको? Yeah, so I will preferably like you to solve this. Okay, so ladder network समझा? अब ये बहुत simple रखा है मैंने, तो ज्यादा कुछ difficult नहीं रखा है. Okay, so let's look at a little बड़ा नेटवर्क रहेगा तो. ओके, ये अभी एग्जाम के लिए नहीं डालूंगी, बट ये बड़ा नेटवर्क रहेगा तो आप इसको कैसे फेस करेंगे? अभी यहाँ पर आप देखेंगे वेरिएबल्स बढ़ जाएगा, कॉमन सेंस. अभी लूप बढ़ गया है तो ABC आएगा, राइट ना? मतलब हमें एक और नोड कंसिडर करना पड़ेगा, उतना ही है. इट इज नॉट डिफिकल्ट. जब भी आप नेटवर्क देखो तो डरना नहीं है. ओके, बिकॉज नेटवर्क्स विल आर पार्ट ऑफ द सिस्टम, यू हैव टू अंडरस्टैंड. ये आपका VA है, ये आपका VB है, और इस बार आप आंसर करने वाले हो. आई एम नॉट गोइंग टू आंसर बिकॉज ऑल आई हैव डन इज आई हैव इंक्रीज्ड वन नेटवर्क. सो व्हाट्स द बिग डील? और अगर ऐसा है तो मेरा करंट भी बढ़ेगा. लेट्स कॉल दिस इज IA. Let's call this as IB. Right? Now you tell me, okay, you are going to tell me what should be my first step. I'm not going to say anything. You are going to tell me what's my first step. Give me answers, guys. I want to know. VC is equal to V2. Yes, VC is equal to V2 is my first step. Correct. VC is equal to V2. What's my second step? I have to think of this current now. ये जो IB आ रहा है, same thing it is actually. तो IB आ रहा है, what should I write IB as? IB को क्या लिखें? Yeah, VC upon 1 by S. Yes, VC upon 1 by S, because that is a farad, so it is 1 by S. So it will come S times of VC. But what is VC? VC is V2. Third step, कौन बताएगा? IB का एक और इक्वेशन लिख सकते हैं. तो IB को और कैसे लिख सकते हैं?
बिकॉज ये स्टेप पूरा टेक्स्ट बुक ने उड़ा दिया. सो IB को क्या लिख सकते हैं और VB minus VC by Z. हाँ, VB माइनस VC अपॉन जो यहाँ पर आपको 1 + 1 हेनरी दिख रहा है ना, इंडक्टर क्या बन जाता है इन एस डोमेन. इंडक्टर को कैसे लिखते हैं हम लोग, ये 1 है तो हमने क्या लिखा है 1/CS लिखा है बेसिकली, राइट, विच यू Ma'am गॉट. S. या so this is S, so I will write this as S + 1. I hope this is understood. I'll write it as S + 1 because मेरा जो 1 हेनरी वो मेरा S है और 1, so ऐसा हो गया. तो अभी इसको कैसे लिख सकते हैं, if I want to further write this, can I write it as, मतलब जैसे बुक में लिखा है, VB is equal to S + 1 times of IB plus VC. fully फालतू है, every time they're going to just go and resubstitute it. So ये क्या होगा, S + 1 होगा. What is IB? It is S times of V2. What is VC? It is V2. So उनको एक इक्वेशन मिलेगा, V2 को कॉमन ले लेंगे. सिर्फ वो इक्वेशन बनाते टाइम थोड़ा केयरफुल रहना. This will become S² + S + 1. ये आपको VB मिला. So थर्ड स्टेप में VB आता है. अब फोर्थ स्टेप, नेक्स्ट स्टेप, डायग्राम की तरफ देखो. इन अदर वर्ड्स तुम्हारा क्या क्या कंप्लीट हो गया है, तुमने यहाँ का कंप्लीट कर दिया, तुमने यहाँ का कंप्लीट कर दिया. अब तुम नेक्स्ट लूप में आ रहे हो. नेक्स्ट लूप में कौन सा करंट दिख रहा है तुमको, तुमको दिख रहा है करंट IA. अभी IA के बारे में सोचो कि IA को कैसे लिख सकते हैं. सो यू आर गोइंग टू टेल मी व्हाट आई शुड राइट IA. एनीबडी, चलो. What is IA? Yes. Yes, yes. IB plus VB by upon VB 1 by by 1 by S. Yeah. VB by plus 1 IB. by S. Yeah, share market हो गया. I couldn't understand anything. 1%. Yes, we give girls 30% quota. Yeah. IB plus VB upon 1 by S. IB plus VB upon, yes, correct. तो IA जो है यहाँ पर भी फ्लो रहा है और यहाँ पर भी. That means I'll write it as VB upon 1 by S plus IB. बराबर है, ये हो जाएगा S times of VB plus IB. And that means that I can write this as IA is equal to S times of, what is VB? VB is that big equation that we have got, S² plus S plus 1 plus what is your IB? IB is nothing but, किधर गया मेरा IB, इधर second step में, S times of V2. So again I will take my V2 common, and if you solve this, can you solve it? And if you solve this, you will get something like S cube plus S² plus 2S. ऐसा कुछ मिलेगा. Now point number 5. Now हमारा कौन सा पार्ट है, वापस एक IA का इक्वेशन आएगा, राइट? कैसे लिख सकते हैं उसको? Think. How can I write IA now? V1 minus VA. VA upon Z plus VA upon 1 by S. No. अभी KCL करना है. IA में KCL करना है. VA minus VB upon S plus 1. हाँ, VA minus VB upon S plus 1. So what is VA going to be? VA is going to be S plus 1 times of IA plus VB. Look behind. यानी कि S plus 1 times of, what is IA? किधर गया मेरा IA? V2 times of S cube plus S² plus 2S plus मेरा VB क्या है? VB है मेरे पास VB है V2 times of S² plus S plus 1. Can you just solve this and check कि आपको V2 जब कॉमन लेते हैं तो कैसा बड़ा इक्वेशन आ रहा है? S⁵ कुछ आएगा. चेक करो. Let me see whether you are able to get that. Just see whether you are able to get it. S⁴ कुछ आएगा. S⁴. देखो आ रहा है क्या? देखो
You'll get it. It's not difficult. NT is very simple. The tactic you should know, the method. Anybody with the answer? Okay, I have somebody giving me the answer. I have Nitish and Nanika both giving me the answer. Yeah, you will get something in terms of s raised to 4 plus 2s cube plus 4s square plus 3s plus 1. ऐसा आना चाहिए. Check whether you're getting that. So I will come to VA. That means मेरा जो VA है मुझे कुछ ऐसा मिलना चाहिए. VA is equal to, you're getting V2 हमेशा आएगा और यहाँ पे s to the power 4 plus 3s नहीं 2s cube plus 4s square plus 3s plus 1. Okay, so VA अपना आ गया. Now point number 6. Now where are we in the diagram? So we have finished. What have we finished? हमने ये complete कर दिया. Okay, that means अपना IA का काम हो गया. IA के 2 इक्वेशन आ गए. अभी नेक्स्ट हमारा ध्यान किसकी तरफ है? I1 की तरफ. Now who will tell me? The last 2 points it is. VA divided by हाँ, VA 1 upon S plus IA. Correct. So I1 is going to be nothing but, what is I1? I1 is going to be, so I think the night class works better than the morning class. People are more active. So yes or no, you agree? So I1 is nothing but VA upon, किधर गया? VA upon 1 by S plus IA. So that means this is going to be S times of VA plus IA. So what's my I1 going to be? Now again, I have to go and search where's my VA. VA is just above my head. So it's S to the power 4 plus 2S cube plus 4S square plus 3S plus 1 plus what is IA? Where is my IA? Where do I see my IA? Okay, IA is over here. ये मेरा right side पे IA है. तो उस IA को मैं वहां substitute कर रही हूँ. So when I substitute my IA, which is S cube plus S square plus 2S, right? So now here again, I will take V2 out common and I'm going to get a big function here. So I'm not taking your time here, but so it'll be a very big function. You should get something like, you can check. So this is going to be something very big. This you have got as I1. Okay, now we have one more thing to go. Who will tell me? अभी एक तो हो गया है हमारा, स्पेंसर ने बता दिया यहाँ पे और यहाँ पे. Ma'am, KCL. Yeah, tell me what is I1? Yes. KCL वापस लगाएंगे तो क्या आएगा? V1 is equal to S plus 1 I1 into VA. V1 is equal to, S plus 1 I1 into I don't think, VA. अच्छा, you're telling me V1. Tell me in terms of I1. वो तो textual answer हो गया. Tell me how will you write I1? In your understanding, what is I1 written as? V1 minus VA by S plus 1. Yeah, it should be V1 minus VA upon S plus 1. So that will be my 7th point here, that I1 can also be written as V1 minus VA upon S plus 1.
And that means I can write V1 as S plus 1 times of I1 plus VA. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, this is S plus 1 and I1 is just above your head, that is V2 times of S raised to 5 plus 2S raised to 4 plus 5S cube plus 4S square plus 3S plus what is my VA? Now what's my VA is again just above S raised to 4 plus 2S cube plus 4S square plus 3S plus 1. So you understand that when the loop increases, obviously the equation will go a little bigger. Because that's nothing to be worried about. But now the question arises, okay, I'm going to get something. I'm going to get V1 equal to V2 times something, right? Whatever that equation is going to come. And it's a very big equation. So you'll get something like S raised to 6 plus 3S raised to 5 plus 8S raised to 4 plus 11S cube plus 11S square plus 6S plus 1. ऐसा कुछ तो बड़ा इक्वेशन आता है. सवाल ये है कि क्वेश्चन क्या पूछा है. So if you read the question and if you remember in the beginning of this lecture, oh no, what did I do? Okay, so I just deleted by mistake. So if you look at the beginning of the lecture, I told you what driving point impedance function will be. Impedance बोला उन्होंने. क्या बोला है? Impedance. So when they say it is impedance, that means we have to talk in terms of 1 and 2. Impedance बोला ना, so I will explain to you later what does it mean by 2 to open. मतलब ये open है, in other words, ये open circuit है. So whenever they say 2 is open, ध्यान से सुनना, whenever they say 2 is open, so जो impedance बनेगा, that is going to be Z11, which is V1 upon I1. Please note this very carefully. Whenever I say 2 is open, अगर मैंने कहा 1 is open, then समझ जाने का it's going to be 2 which is equal to V2 upon I2. So I repeat once again, when I say 2 is open, it is V1 upon I1. And again, if you read the question, it is impedance. Impedance is always voltage upon current. And if I say 1 is open, मतलब left side में कोई मतलब open circuit है basically. So that time you will write V2 upon I2. मतलब हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ वो V1 और I1 के वैल्यू को साथ में डालना है. और हमारे पास ऑलरेडी I1 है इधर, हमने I1 का निकाला ही है. This entire thing is I1. And हमारे पास V1 भी है जो हमने यहाँ निकाला है. So all we have to do in the question was to write Z11 is V1 upon I1, and obviously the V2 part gets cancelled. So you will get S raised to 6 plus, 3S raised to 5 plus 8S raised to 4 plus 11S cube plus 11S square plus 6S plus 1 upon this entire function, that is S raised to 5 plus 2S raised to 4 and so on. Clear है क्या? Ladder network समझा क्या? नॉर्मली हम लोग देते हैं कि आप V2 अपॉन I1 निकालो या I1 अपॉन V2 निकालो या V2 अपॉन V1 निकालो. एंड इफ दे से सच स्टेटमेंट्स, घबराना नहीं है. जो ओपन रहता है उसको इंक्लूड नहीं करना है. तो जब 2 ओपन है मतलब आंसर में सिर्फ 1 आएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, और अगर 1 ओपन है तो दोनों में 2 आएगा. Any doubts till now? If you have any doubts, you can ask, because okay, so Atharva says, ma'am, if 1 is open, then we only have to, yes, yeah. That's what I have mentioned here. Just take it as you'll understand when I do Z. Okay, Ma'am? parameter, yeah. Means we don't have to proceed with the rest of the steps? No, nothing to do. It's like done. Okay. Like in the for otherwise in the questions they will specify. जैसे यहाँ पे specified है ना
कि I2 upon V1 बताओ. You know, so if it's a transfer function, we will obviously keep on saying कि कौन सा ट्रांसफर फंक्शन है, बिकॉज मैंने जो पहले केस में किया वो ट्रांसफर फंक्शन सिमिलर टर्म्स का था, और जो दूसरा टाइप ऑफ ट्रांसफर फंक्शन होता है वो I2 अपॉन V1 होता है, मतलब ये एडमिटेंस फंक्शन है. V अपॉन I इम्पिडेंस है और I अपॉन V एडमिटेंस है. So we will obviously tell you what kind of function we want, whether we want this kind of function or we want like in the previous case we saw V2 upon V1, or we want a combination of some current is from somewhere and V1 from somewhere else. So is this understood, guys? I mean, any doubt here? So have you understood ladder network? Any doubt you can always ask, because I believe that, you know, it will be helpful to you. Ma'am, on this concept, how are MCQ questions being formed? Because Yeah, according so to we me, are one going to, is in 1 minute. that's what I said. I will ask you middle. That means I'll ask you, say, for example, I will tell you to find out what is VA, for example. So you should know that what VA is equal to. So when I'm saying what is VA, I want it, or everything, if you see, comes in terms of V2. So I will ask you, what is VA in terms of V2? Or I can ask you, what is I1 in terms of V2? Are you getting it? So it could be in any step. So if you don't know the ladder network, you'll not be able to give the answer. Ma'am, so would that even consider like simplification of the terms? Because if you have to do simplification, we still have to go order wise, right? Yeah, you have to go order wise. You have to solve it order wise only. Anyways, you'll have to solve it order wise. Okay, ma'am. So instead of the final transfer function, like the See, because question in the can be from exam, steps. we are expecting a paper in the final which is going to be subjective and objective. Okay, so what we are looking forward to December is, if you are continuing the lockdown as per the instructions, it is going to be objective plus subjective. You know, I have given these exams when I was writing exams at IIT for PhD admissions. They used to give objective. So you have 40% of the paper will be objective, but the rest of it is subjective. तो solve तो करना ही पड़ेगा ना. आप समझ रहे हैं, आपको कॉलेज में बुलाया जाएगा, आपको कंप्यूटर के सामने बिठाया जाएगा, and you'll have to do it. That's what I'm saying. Okay, ma'am. Okay, yeah. So Ma'am, but it's from home, no students. Ma'am, can you explain the last part once again? which last part? Ma'am, about two dash opening. You just Yeah, said so and the said 2 1 and dash Z. part is very clear. अगर 2 open रहता है तो V1 upon I1 लेना है, मतलब 2 को उड़ा देना है, because it's open circuit basically. And if it is 1 open, then you have to write 2 here. समझा? अगर 2 है तो यहाँ 1 आएगा, और अगर 1 है तो यहाँ 2 आएगा. अभी समझेगा तुमको मैं क्या बोल रही हूँ. Just going to do one more thing so you'll understand. So Atharva says tomorrow test is after 6 p.m. Okay. So if it is after 6 p.m, then we'll see, after that we'll meet. ये समझा? अभी I hope ladder network समझा. So I'm just doing one more concept. Can I do one more concept and then we'll wind up? Okay, then we'll do it tomorrow. तो ज़्यादा ध्यान रहेगा, because Wednesday paper है ना. So I'm doing one more concept for all of you. So ladder, any doubt now? Ladder is done. Ladder is simple. It's the same process. I don't think it's something very big. So I'm just doing one more small concept before you go to bed today. That is called Z parameters. And it's one of the easiest of the calculation. That's why I thought, you know, we'll finish the Z parameters off. It's not very complicated. So if you see Z parameters, we can have a circuit which is only resistors, or we can have a combination of inductor, capacitor, like you saw. And I will ask you to find what is Z parameters. So there is this equation. I want everyone to write it down right now in your books. V1 is equal to Z11 I1 plus Z12 I2. And V2 is equal to Z21 I1 plus Z22 I2. So this is the standard notation. This is nothing but mesh analysis se aata hai apne ko. And write the matrix, you know, matrix version of it. So V1, V2, and then here it is Z11, Z12, Z21, Z22, and
यहाँ पर आएगा I1 और I2. जस्ट राइट दिस एंड की, बस उतना करो. पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है और इस फॉर्मूला को दिमाग में रखना है. ये कैसे आया, हमने कैलकुलेशन मेश एनालिसिस करके आता है ये. Just tell me when it is done. वोल्टेज लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, करंट राइट हैंड साइड पे आएगा. Z11, Z12, Z21, Z22 ऐसे आएगा. Can I proceed? Yes, ma'am. Yeah. So the thing is that now let's look at this kind of question. क्या करना है, कैसे इसको ये फॉर्म में लेके आना है. मेश एनालिसिस करना है, कुछ करना नहीं है, मेश एनालिसिस करना है. सो जस्ट पास करंट हियर I1, just pass another current. Now see how the second current is. Okay, the second current, can you see your I2 is already defined here. So if you see I2, it has to be taken in the direction, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा और जो बचता है उसको क्लॉकवाइज लेना है. सो I1 I2 फिक्स है, I1 और I2 डायग्राम के हिसाब से जाएगा और जो I3 आएगा, जो जितना भी लूप्स बीच में होगा उसको क्लॉकवाइज लेना है. So now I'm going to just do KVL, normal KVL to mesh 1. KVL to mesh 1, not a big thing. So it's going to be V1 is equal to 3 times of I1 minus 2 times of I3, which you will get as equation number 1. Similarly, you will do KVL in mesh 2. Now look at mesh 2. It's going to be V2 minus 2 times of I2 plus I3 is equal to 0. I hope you understood why I took positive sign. Because ये दोनों clockwise नहीं है, इन दोनों का direction उल्टा है. जब क्लॉकवाइज रहता है तो हम माइनस लेते हैं अंदर, I1 माइनस I3 लेते हैं. यहाँ पर मैंने प्लस डाला है. प्लस क्यों डाला, क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं. सो मेरा V2 का इक्वेशन आएगा 2I2 प्लस 2I3. इक्वेशन नंबर V1 is 1I1 minus 2I3. व्हाट V1. हाँ, मैंने वो सॉल्व किया है. मुझे लगा कि तुमको केवीएल आता है ना. सो V1 मैंने वो सॉल्व किया है. V1 माइनस I1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ I1 माइनस I3 को सॉल्व करके लिखा है. समझा, उसको लिया है वहां पे, इसलिए तो 3 आया वहां पे. ठीक है. सो 1 इक्वेशन इज डन. अभी मैं थर्ड लूप, मतलब बीच का जो लूप है ना, उसको सॉल्व कर रही हूँ. ये बीच वाला लूप, इधर ये बीच वाला लूप सॉल्व कर रही हूँ. सो आई विल गेट नथिंग बट व्हाट, आई एम गोइंग टू सॉल्व इट. माइनस 2 टाइम्स ऑफ I3 minus I1, I hope you are following, minus I3 minus 2 times of I3 plus I2 is equal to 0. Okay, इसमें से I3 इक्वल टू एक इक्वेशन लेके आना है, मतलब I3 के टर्म्स में इक्वेशन आएगा. सो इफ यू सॉल्व दिस, ओके, सो आई एम जस्ट सॉल्विंग दिस. तो हमें क्या मिलने वाला है यहाँ पे, कैन आई से इट्स गोइंग टू बी 2I1, you can check, then I will get minus 2I2, then I will get minus 2I3 minus 3I3 minus 5I3 equal to 0. I hope you are following. And then I can write I3 equal to, मेरे को एक इक्वेशन चाहिए, राइट. तो I3 उस तरफ जाएगा तो मुझे मिलेगा 2/5 टाइम्स ऑफ I1 माइनस 2/5 टाइम्स ऑफ I2. सो ये मेरा बन गया इक्वेशन नंबर 3. Now this is standard format of every time when you do Z parameters. मतलब पहले mesh analysis in the first mesh, ये मेरा first mesh है, ये मेरा second mesh है. This is my second mesh और बीच वाला mesh I3 लेना है. Now why am I doing this? Why did I get I3 equal to something? Can you use your brains?
मैंने जो आपको पहले लिख के दिया उसका और ये कनेक्शन क्या है? आई वांट z पैरामीटर्स, राइट? z पैरामीटर्स में i3 दिखा था स्टैंडर्ड इक्वेशन में, मुझे i3 को एलिमिनेट करना है. If you look at my equation, standard equation, it will look similar to what you have got here, v1 equal to something and v2 equal to something. But क्या standard equation में i3 था? नहीं था. So i3 को eliminate करना है. So equation 1 2, ये जो 1 है तुम्हारा, 2 है तुम्हारा, 3 है तुम्हारा, 3 को 1 और 2 में सब्स्टिट्यूट करना है. क्या करना है? 3 को 1 और 2 में i3 के जगह पे सब्स्टिट्यूट करना है. कैन यू सब्स्टिट्यूट एंड टेल मी व्हाट यू आर गेटिंग? सो फ्रैक्शन में ही रखना उसको. So when you solve it, that means when you substitute it, you will get v1 equal to 3 times of i1 minus 2 times of, what is my i3? It is 2 by 5 times of i1 minus 2 by 5 times of i2. So don't skip any step in life. So this is 3 times of i1 minus 4 by 5 times of i1 plus 4 by 5 times of i2. So this essentially comes to something like 11 upon 5 times of i1 plus 4 upon 5 times of i2. So I got my first equation. Now look at it, and can anybody tell me what is Z11? Anybody? What is Z11? Eleven by 11 by five. 5. Yeah, 11 by 5 is my Z11 and my Z12 is 4 by 5. समझा? मतलब हमको वो ओरिजिनल इससे कंपेयर करना है. Similarly, आप V2 का भी लिख सकते हैं. What is your V2? V2 is going to be 2 times of I2 plus 4 upon 5 times of I1 minus 4 upon 5 times of I2. And that means my V2 is equal to 4 upon 5 times of I1 plus 6 upon 5 times of I2. So from this and the second equation, I've got all the 4 parameters of Z. मुझे Z11 आ गया है, मेरा Z11 ये वाला है, ये मेरा Z12 है, ये मेरा Z13 है और ये मेरा Z14 है. Sorry, Z11, Z12, Z21 and Z2. ये समझा है क्या? देखो. So in the final, I'm just going to represent it like, Z parameter is equal to, I will just write the final answer, 11 by 5, 4 by 5, 4 by 5 and 6 by 5. ये मेरा final answer होगा. And this is normally how the question is asked. We will give you a Z parameter or a matrix and we will ask you a question whether it is symmetrical and whether it is reciprocal. I hope you are listening to me what I'm saying. The Z matrix will be given to you and a simple question will be asked whether it is symmetrical or it is reciprocal. So what is the condition of symmetry? What is the condition of symmetry? So this is your Z11, this is your Z12, this is your Z21, this is your Z22. तो मैं समझाऊंगी अभी ये 1 1 1 2 सब क्या है. अगर वो सिमेट्रिकल है, अगर वो सिमेट्रिकल है तो Z11 must be equal to Z22. तो क्वेश्चन ये आपकी तरफ है कि इज इट सिमेट्रिकल? क्या ये दोनों वैल्यूज सेम है? No. नो. सो इट इज नॉट सिमेट्रिकल. रेसिप्रोकल में, सो दिस इज द कंडीशन ऑफ व्हाट? सिमेट्री. एंड रेसिप्रोकल में Z12 should be equal to Z21. So is it reciprocal? Is it reciprocal? Yes, ma'am. Yes, it is reciprocal because these two values are same. So ऐसे ही पूछा जाएगा कि is it symmetrical, is it reciprocal? So अगर आप देखेंगे this particular condition is satisfied for reciprocity and it is not a symmetrical network. So this is your Z parameter. अभी मैं थोड़ा सा generally बात करूंगी just to make you understand what this two-port network does. So ये two-port network होता है, मतलब
it has 2 ports. That is the kind of 2-port network we are looking at. 2 terminals, and these you're seeing in EDC, you're seeing in many of your electrical circuits, you must have seen these kind of networks. So this port is called as the first port, and this is called as the second port. Basically, we have a concept which, if you remember, I have used before: excitation and response. So excitation is always on. Excitation is what input you're giving, and response is what output you're getting. Just like I'm teaching you, and what is your response is your output. And whatever we get here, we can say it is nothing but the function, what kind of function we are going to get. So when I'm telling you Z11, so what was the equation we had written? V1 is equal to Z11 I1 plus Z12 I2. So let's take a look at what this is now. Okay. So suppose I tell you I2 is 0. I hope everyone is listening. Suppose I tell you I2 is 0. मतलब मैंने कहा कि यहाँ का current 0 है, जो हम ladder network में कर रहे थे. अगर I2 0 है तो मेरा Z11 का वैल्यू क्या आ रहा है? V1 upon I1. Do you understand now? I2 is 0 का मतलब क्या होता है? I2 is 0 का मतलब वो सर्किट ओपन है. यहाँ पे ओपन सर्किट करके रखा है, यहाँ पे बैटरी लगाया है, यहाँ पे कुछ नहीं लगाया है. सो अगर आप राइट साइड पे कुछ भी नहीं लगाओगे तो आपका करंट ओपन सर्किट हो जाएगा. मतलब वायर तोड़ गया है, वायर टूट गया है, तो I2 0 है. तो इक्वेशन के हिसाब से ये वाला पूरा फैक्टर 0 हो गया. तो हमें Z11 क्या मिलेगा? V1 upon I1. तो ये जो 1 होता है, it means the input was at 1 and the current was also taken at 1. हमने जो भी कैलकुलेशन यहाँ किया है वो दोनों 1 पे हुआ है. So that's why we call it as Z11. So Z11 is when the output is open circuited. The output is open circuited, matlab this is your output and this is your input. So when your output is open circuited, what you got is Z11, which is called as open circuit input impedance. Impedance ही है ना, V upon I तो impedance ही है. So input upon जो हमें मिला है, this I can even write at I2 equal to 0. So they sometimes write it as like this, at I2 equal to 0. ये समझा है क्या? देखो, suppose I tell you my I1 is 0. Suppose I tell you I1 is 0. Can anybody tell me what is Z12 then? What should I say Z12? V1 by I2. Yeah, V1 by I2. And it happened when my I1 became 0. Now, इस बार कौन 0 हुआ? ओपन नहीं, इनपुट की आउटपुट. कौन 0 हुआ? इनपुट साइड की आउटपुट साइड? Output. I1 is 0. I1 is 0. Input side. Input side. 0 हुआ ना, तो Z12 is equal to V1 upon I2. So इसका नाम क्या है? इसका नाम है ओपन सर्किट रिवर्स ट्रांसफर फंक्शन. रिवर्स. You don't have to remember the names. You just have to remember कि ये Z12 आता कब है? जब मेरा I1 0 होगा. Because we are all going by the standard equation. So थोड़ी देर पहले जब हम लैडर नेटवर्क कर रहे थे, आपको वही बता रहे थे कि 2-2 ओपन है. 2-2 ओपन मतलब मेरा आउटपुट 0 है. अगर मेरा आउटपुट 0 है तो मुझे Z11 ही मिलेगा. अगर मैंने दूसरा सर्किट लिया, मतलब वो जो दूसरा इक्वेशन था, if I take the next equation, वापस ये मेरा 2 port है. This is my port 1, this is my port 2, and I'm looking at the second equation. What was that? V2 is equal to Z21 I1 plus Z22 I2. Again, if I say, I say that my I2 is 0, मेरा output 0 है, मतलब ये पूरा term उड़ गया, तो मुझे Z21 मिलेगा. So what is Z21? Can I say it is V2 upon I1? And if my input is 0, that means ये factor 0 हो गया, then can I say Z22 is V2 upon I2?
ये समझा कि देखो, सी इट इज नॉट डिफिकल्ट. वो क्या कर रहे हैं, वो आउटपुट और इनपुट देख रहे हैं. मतलब आउटपुट एट 2 व्हेन इनपुट इज गिवन. मतलब अगर मुझे 2 और 1 देखना है, आई कैन कॉल इट एज आउटपुट एंड इनपुट. सो व्हेन आई से 2 2, इसका मतलब क्या, आउटपुट एट 2 व्हेन इनपुट वाज आल्सो एट 2, बिकॉज दिस इज व्हेन I1 इज इक्वल टू 0. मतलब इनपुट तो था ही नहीं. तो आई टुक माई output at 2 only, and I gave, and it was due to the current that was flowing here, that is I2. And याद रखना I2 का direction हमेशा इस तरफ लेना है. I2 will always be taken like this, and I1 will always be taken like this. So I1 is coming and I2 ऐसे आपके हाथ में ऐसा I1 और I2 ऐसे आ रहा है, दोनों तरफ से ऐसे आएगा. So if I'm taking Z to 1, it means output at 2 because of input at 1, because in this case my input is not 0, my I2 is 0. And over here, Z22 is V2 upon I2. If you have any doubt in this, you ask me, because this is something I want to be digested. Any doubt, children, over here? It's always 2 into 2 matrix, or it can be, this one will always be 2 into 2 Atharva, because 2 port matlab 2 into 2 matrix. 3 port आपको अभी नहीं है, वो final year में है. अभी it will remain 2 because 2 ही port है, तो जितना port होता है matrix उसी का order होता है. Okay? तो 2 port network, चैप्टर का नाम भी 2 port network है. वो हमेशा 2 into 2 matrix रहेगा. Yes. Ma'am, if in the Z parameter question, if we have 4 meshes, then we will have 3 currents, right? Like 4 currents we will have. You will have, no, तो फिर वही करना है. That means हर बार उसको eliminate करते जाना है. You understand? Okay, ma'am. You have to eliminate it, and you will not get 4 currents Advait, because हम लोग इतना tough नहीं करेंगे. हम लोग क्या करेंगे कि आपको 3 ही लूप देंगे. Like say for example ये next वाला था, तो आपको सिर्फ हम पैरामीटर्स चेंज करेंगे, लूप्स को इतना ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, बिकॉज आपको एलिमिनेट करके उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है. हमेशा वही काम करना है कि यू हैव टू ब्रिंग इट टू V1 is equal to Z11 I1 plus Z12 I2 and V2 is equal to Z21 I1 plus Z22 I2. Okay, ma'am. Okay. Any other doubt, anybody? Have you understood ladder network and Z to some extent? Any problem here? Anyone? Okay. So I'm just doing one last formula. Last formula just before we wind up. ये formula आपको सिर्फ याद रखना है. Okay. Now I just told you what is Z11, Z12 और हमने mesh analysis से उसको solve किया. Suppose मैंने कहा कि आप इसका T network बनाओ. Z11, Z12 ये वाले values आपको पता है. आपने matrix मैंने दे दिया आपको. मतलब I am going to give you the values. Okay, just like I gave you 4 by 5, 11 by 5, जो भी है मैंने आपको बता दिया था. So let's take a simple example. I am giving you 2, 3, 1, 2. Okay, first question, is this reciprocal or symmetrical? Symmetrical. Symmetrical, ma'am. Yes, symmetrical. मतलब ऐसे गया तो S symmetrical है और ऐसे गया तो reciprocal है. SR है. याद रहेगा क्या? ऐसे गया तो S है और उस तरफ से R है. So S रहेगा तो वो 2 to equal है. That means the circuit is symmetrical. और आपको पता है कि ये 2 क्या है? This is Z11, this is Z12, this is Z21 and this is Z22. ये पूरा फालतू है. ये कभी-कभी 10 marks का क्वेश्चन आता है इस पे. So in the exam, that is in your test, I will ask you, that means I will give you the Z matrix and I will tell you find the T network. तो उसका एक फॉर्मूला है. देखो Z11 क्या है? Before that over here, हाँ ये वाला फॉर्मूला देखो. What is ZA? ZA is over here. This is ZA, this is ZB and this is ZC. This is called T network. T में shape में है.
सो ये टी नेटवर्क बोलते हैं हम इसको. तो व्हाट इज ZA? इट इज Z11 minus Z12. कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज ZA? ZA कितना लू? व्हाट्स द वैल्यू? How much? मैम 1 हाँ मतलब 2 minus 2 3 आ रहा है, minus 1 2 minus 3 आ रहा है, -1 आ रहा है, बट वो 1 ही लेंगे हम, राइट? Because impedances, resistors don't have, we are not going to take the negative side. So ZB, अभी ZB क्या है? Z22 minus Z21. So Z22 minus Z21 कितना होगा? See, all the 1. values are there. So Z22 minus Z21 is going to be again 1. What is ZC? ZC is equal to Z12 is equal to Z21. 1. हाँ, अभी इसमें एक ये है, इसमें अगर आप देखेंगे कुछ तो हमारा मैच नहीं हो रहा है. कैन एनीबडी थिंक आई हैव डन समथिंग रॉन्ग हियर? Something that Z12 and Z21. Z21 and Z12 must be Same. 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 मतलब हम T नेटवर्क उसको बनाएंगे जो रेसिप्रोकल है. समझ रहा है? Your Z11 and your Z22 values can be different, but your Z21 and Z12 value has to be same. मतलब रेसिप्रोकल नेटवर्क से T नेटवर्क बनाना इजियर होगा. ये क्लियर है? Let me give you one more example just to clarify if your head is let's say this is 3, let's say this is 3, this is say 5, and let's say this is 6. So this is reciprocal, right? So that means this answer is equal to 3 ohms. Got it now? ये मिला क्या? देखो. और फिर ZA क्या है? This is Z11, 3 minus 5 minus 3, मतलब this is going to be 2 ohms. And ZC is equal to ZC क्या? ZB क्या है? Z22, मेरा Z22 क्या है? 6 minus of 3. That means again this is going to be 3 ohms. ये समझा है क्या? So when I give you a matrix, two things you have to check. क्या वो reciprocal है और क्या हम T network उससे बना सकते हैं? Any doubt here? This is the last topic for tonight. So what we did, we understood how to do ladder network. We understood how to write a Z matrix, which I will repeat again tomorrow, and how to write a T network. Yes. Ma'am, it will satisfy the T network only when it's symmetric and reciprocal, right? Yeah. Because that ZC, no, ZC is normally Z12 is equal to Z21. Abhi ulta bhi I can ask you. That is why the equation is written above also. So two formulas that you have to remember for the exam is this. That means I can give you a what kind of network? T network. And I can tell you to find 1, 1, 1, 2, 2, 1 and 2, 2. But if you look at 1, 2 and 2, 1, both are ZC. Get it? So the circuit Yes, has ma'am. to be reciprocal for you to draw the T network. Can you remember these two formulas at least for the exam? That is this formula that we have written here. If you can remember this two formula, life becomes a little easier. In fact, you don't have to remember it. If you look at Z11, now just look at the diagram. Can you see, what is Z11? It is ZA plus ZC. मतलब Z11 यहाँ से देखते हैं. So ZA plus ZC. Then if you ask me what is Z22 without looking at the formula, I will look at this side and I will say it is ZB plus ZC. So what is Z11? It is ZA plus ZC. What is Z22? It is ZB plus ZC. So you got these two formulas. And what is my Z12 and Z22? It is ZC in the middle. समझा क्या? बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ ये डायग्राम याद रखो कि ABC किधर है. इधर A है, इधर B है और इधर C है. तो मेरा ZC क्या है? Z12 और Z21 ZC है. What is my Z11? ZA plus ZC. What is my Z22? ZB plus ZC. अभी क्लियर है? अभी कुछ डाउट है क्या? बताओ. ठीक है, कर पाएंगे? अगर Z पैरामीटर दिया तो T नेटवर्क बनाना है, या T नेटवर्क दिया तो Z पैरामीटर बनाना है. ये एक क्वेश्चन है, मतलब मैं आपको बता रही हूँ, 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछने वाली हूँ मैं कि आप Z पैरामीटर से आप T नेटवर्क बनाओ या T नेटवर्क से Z पैरामीटर बनाओ.
So either I'll give you the matrix or I will give you the T network and tell you to find the Z parameters. Okay, so I have already told you, I'm giving you a blueprint basically, slowly. 2 marks के जो क्वेश्चन रहेंगे उसमें एक क्वेश्चन तो ऐसे आने वाला है which is going to be to convert the Z parameter to T or T2 and 3 marks का जो क्वेश्चन है उसमें एक लैडर नेटवर्क का क्वेश्चन आएगा. I hope it is understood. So I will slowly give you the blueprint. तो कल शाम तक आपको एक blueprint समझ में आएगा कि आपको क्या क्या याद रखना है. ठीक है? So that's it from me today. I hope you have a good night's sleep and you have understood today's session. Thank you for joining me. Ma'am,